So today in Teachings of Superiority WhatsApp group, which has about 250 participants, Teachings of Superiority WhatsApp group with these 250 participants is the WhatsApp group of Superior Society, where all the superiors who contribute on regular basis every month in money form and who consider themselves superior, who consider themselves associated with superior society. So those people are there in that group. We did a session on money consciousness self-hypnosis for 1.5 hours and about 25 people joined. So we did different kind of exercises. The objective of doing this exercise is that our brain has different parts. The parts next to our ears is temporal lobe, which has audio memory stored. The part behind our head is occipital lobe, which has visual memory stored. And in the top of the head we have parietal lobe, which has sensory and body experiences memory. And in front of our head we have frontal lobe, where the third eye basically lies, where all the magic, all the visualization, all the execution happens. But because of bad diet, bad lifestyle, no gratitude, a lot of stress, a lot of tension, a lot of small attention span, or a lot of negative energy around you, a lot of uncomfortable life, a lot of health issues, or general dissatisfaction in your life, gradually starts desensitizing the frontal lobe, which can be sensitized again, activated again with gratitude, third eye meditation, just taking deep breaths and taking your attention toward the third eye and doing some money consciousness exercises, or just getting lost in the darkness, or simply enjoying the burning sensation of the flame of third eye on the forehead. So all these things are basically increasing the power of third eye and increasing the authority in life, Agya Chakra. The more flame is there on the Agya Chakra, more a person is able to give Agya, an order, a command to this matrix. So your wish is your command. Great program by Kevin Trudeau. So that your wish is your command program was all about living such kind of life, which is a superior life. So by increasing your neuroplasticity, by doing different chakra exercises, doing GWS, self-reflection, self-expression, all these superior things that have been there in Superior Society for past 8 years, they effectively they're targeted towards chakras, and they're targeted towards activation of frontal lobe, where the real magic happens. Because all the people who know what is right way of living, how law of attraction works, how affirmations work, how visualization happens, how to sleep early, how to wake up early, how to maintain schedule, how to remain healthy, everything, every person knows everything, but all the information is there in their brain, in the temporal lobe and in the occipital lobe and in the parietal lobe. But because the frontal lobe is not very well activated, the execution is not happening, the brain is not able to propel and push the body towards those quantum states, those quantum realms. ठीक है, एक ये चीज है. दूसरी चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि एब्राहम हिक्स ने हमेशा कहा है कि क्लैरिटी इज द करेंसी.
जिंदगी में किसी इंसान के पास बहुत सारा पैसा हो लेकिन उसको जिंदगी में कंफ्यूजन हो, उसको पता ही नहीं हो उसे वो क्या जानना चाहता है, क्या पाना चाहता है, क्या करना चाहता है, तो गरीब है। बट किसी इंसान के पास उतना पैसा नहीं है लेकिन उसका सर्वाइवल ठीक ठाक है और उसे क्लैरिटी है, तो वो सुपर रिच है। तो क्लैरिटी इज करेंसी। तो क्लैरिटी इज करेंसी से बात निकल कर आती है कि विष्णु, शिव, उसमें गणेश और पार्वती, नॉट एग्जैक्टली विष्णु बट जो गणेश पार्वती वाला प्रसंग है और जो दिवाली वाला प्रसंग है उसको समझना जरूरी है। तो गणेश पार्वती वाला और ये दिवाली वाला प्रसंग ये है कि जो पार्वती क्या है, पार्वती इज बेसिकली ऑल दिस माया, दिस लाइफ, दिस मैनिफेस्टेशन, this matrix, this body, all the experiences, all the people that I've met, all the food that I've had, all the places that I've been to, all these things are fundamentally Parvati. But this is the, again, a fundamental nature of this Parvati is to get dirty. So this Maya, this matrix wants to bathe. But again, according to the mythology, the bathing woman wants to protect, wants to keep some kind of cover. So what the woman does is she takes the dirt of her body and creates Ganesha, or Ganesh I must say. She connects the dirt of her body and creates Ganesh. Now Ganesh is the destroyer of obstacles, destroyer of the obstacles which are coming in the way of the expansion of this matrix. Because taking bath is what? A woman is taking bath. A woman wants to take bath, that means she is expanding. She wants to relive this life with a new freshness. So the boundary between her body and the world, she is cleaning that boundary so that she can have a fresh experience of this matrix, of this Maya, of this world, of this Jagat. So I have always been very, you must say, compulsive. I have always been very compulsive about cleaning. I am not saying I am cleanliness freak. I am cleanliness attitude freak. I may not be 100% clean all the time. My room may not be 101% clean all the time, but I am always trying to clean something or trying to be mindful of all the unnecessary litter or objects or people or conversations or matters. Because one currency is, of course, clarity. Another great currency is neuroplasticity. Another great currency is reticular activation system of brain. Another great currency is mirror neurons. So if someone is using your neuroplasticity for their benefits against you or not in your benefit, it is not good. It's like spilling your money. It's like throwing all the money from a bank account to out there on the roads. So one must be very careful about the neuroplasticity, which information is repetitively going in their brains, trying to catch the hold of their neurons. And second thing is RAS. So RAS means when you start giving certain kind of information to the brain starts getting programmed to look at the world in a certain manner. So if you know how your RAS should be, if you are very well clear about the perspective that you want to own and live in your life and look at the life in that way, you should be very protective of that perspective, of that paradigm. So unless you are getting rid of all the clutter, all the negative things, useless objects and people,
and contacts and chats and images and videos, PDFs, papers, everything. The Ganesha will not come. The unmanifest will not be able to find its way to come into manifestation. The Avyakt will not be able to find that clear path for the Lakshmi to walk. आप समझ रहे हैं कितनी गहरी बात है। अभी तो हमारी मम्मी नास्तिक हो गई हैं, इसलिए जो नास्तिक लोगों का ग्रुप होता है जैसे कि विपස්සना वाला, उसमें जाके वो सेट हो गई हैं। बट जब वो फुल आस्तिक थी और लक्ष्मी की पूजा करती थी, दिवाली को लक्ष्मी की पूजा करती थी और अन्य समय भी अलग अलग ओकेजन्स पे देवी की पूजा करती थी, तो उस समय पेन रखती थी अपना, बिकॉज माई मदर वॉज क्लर्क, नाउ शी इज रिटायर्ड। तो पेन से बेसिकली अपना सर्वाइवल और हमारा सर्वाइवल देख रही थी। तो पेन के अंदर रोली धागा बांध के वो वहां देवी के चरणों में रखती थी और पूजा आगे कंटिन्यू होती थी। तो पूजा के दौरान कोई भी बच्चा, वो जो मेन गेट खुला हुआ है उस मेन गेट को भी खोल के रखना होता था, और उस मेन गेट से भी अंदर के जो गेट है वो भी खुले हुए हैं। तो वहां से लेकर यहां पर जहां तक देवी की तस्वीर लगी हुई है, उसके बीच में कोई बच्चा ना बैठे, कोई ऑब्जेक्ट ना रखा हो, कोई हम ना बैठे, ताकि देवी बड़ी आसानी से और सरलता से आ सके। वाह क्या शानदार प्रैक्टिस है न्यूरो पाथवेज बनाने की भाई साहब, फुल न्यूरो प्लास्टिसिटी। मतलब इंसान अपने न्यूरॉन्स में जाके क्या कर रहा है, ये वो भारी करना शुरू कर दे। वो तो पेड़ को दिखाना शुरू कर दे, देखो भाई ये पेड़ है, ये पेड़ 100 करोड़ का पेड़ है, इस 100 करोड़ के पेड़ पे जो जो भी ये शाखाएं लग रही हैं ये 10-10 करोड़ की हैं, ये 5-5 करोड़ की हैं, उसके 5-5 करोड़ पे कुछ लाख की शाखाएं लग रही हैं, पत्तियां लग रही हैं, वो सब मेरी जिंदगी का न्यूरॉन है। सो यू लुक एट द न्यूरॉन that actually lies in my brain and is magnified here into the tree, and look at the tree of 100 crores which are there in my mind. So when you start giving certain kind of information to your brain on repetitive basis, your brain starts allocating a space. आप समझ रहे हैं क्या बात चल रही है यहां पर। तो जब तक कि क्लीनिंग नहीं होगी लोगों की इमेजेस की, चैट्स की, वीडियोस की, तब तक जिंदगी क्लटर्ड रहेगी। और वो ग्रेस का, वेलबींग का, स्ट्रीम ऑफ वेलबींग का जो पाथ है विच एसेंशियली लाइज इन योर ब्रेन, वो जो न्यूरोपाथ है वो डेवलप नहीं होगा। सो बिकॉज ऑल दोज थिंग्स विल कीप सीकिंग योर अटेंशन, विल keep your path dirty, cluttered. So हम ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले 3 महीनों से हमने बड़ी तेज रफ्तार से काफी सुपीरियर्स को अपने बर्ताव से नाराज करना शुरू किया, जिसकी वजह से वो नाराज हो गए। उसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं, लेकिन उसकी वजह से वे चले गए। उनके मार्ग अलग थे, उनकी राह अलग थी, उनके तौर तरीके अलग थे। जब वो चले गए तो उसके बाद अब शांति है, सुकून है, बहार है, satisfaction है। I must say, I'm saying it on record that on 2nd of September 2024, it is the most satisfactory day of my life in superior society. तो superior society में इससे ज्यादा सुगंधित, शांति वाला, सुकून वाला, satisfaction, संतोष वाला, बहार वाला, जिसको हम कह सके कि पॉजिटिव एनर्जी आ गई, an energy of abundance, energy of gratitude, energy of creativity, energy of proactivity, वो सब आ गई है। ऐसा पहले कभी हमें महसूस नहीं हुआ था, जो कि अब महसूस होने लग गया है।